हेलो फ्रेंड्स, स्वागत मो चैनल को। तो आपण को स्वागत करछि मो चैनल रे। तो आज आम डिस्कसन करवा कोर पेपर 2 रो हमर जो क्वेश्चन असेंबली विषय रे। तो आज आम माने भेरी शॉर्ट माने आम क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा। तो चलंतु आपण को बहुत सुविधा हो। तो चलंतु वीडियो को स्टार्ट करवा। तो फर्स्ट क्वेश्चन दीछि देखो, What feature of the Indian state have been as described in the preamble of Indian Constitution? तो यार आंसर है इंडिया इज ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक माने स्टेट। तापरे नेक्स्ट दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 रे दीजिएगा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज लेट ऑन इन इट्स प्रीएम्बल। तो यार आंसर है देखो, टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडियन जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तापर क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, हमर क्वेश्चन नंबर 3 रे देखि देखो, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड एंड एक्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली on the 26th November 1949 to complete our constitution, Indian constitution. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अछि, इन इज द प्रीएम्बल ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आंसर देखिए देखो, यस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रूल दैट प्रीएम्बल इज ए पार्ट of the constitution of India. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखो 5 नंबर को हमरा, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यार आंसर है देखो, प्रीएम्बल इज ए पार्ट of the basic structure of the constitution. It lays down the basic future objective of the Indian state. It is a key to the interpretation of the constitution. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड, हमर 5 नंबर हमर 6 नंबर क्वेश्चन, नेम द 5 मेजर सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेम द 5 मेजर सोर्स of the Indian Constitution. First source, the ideal of the Indian struggle for freedom. Second source, some foreign constitution, UK, USA, Canada, Ireland and others. तापर थर्ड है हमर थर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तापर 4 दे दीछि देखो, रिकॉर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। और 5 दे दीछि पार्लियामेंट्री स्टैच्यू and judicially decisions. तापर हम नेक्स्ट को जीवा हमें तापर, व्हाट इज 7 नंबर क्वेश्चन हमर एटा, व्हाट इज मीन्ड बाय द सेइंग दैट इंडिया इज ए रिपब्लिक। आंसर दीछि देखो, इट मीन्स दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट हु wields the sovereign power of India. 7 नंबर गला। तापर 8 नंबर देखो, हाउ इंडिया इज ए डेमोक्रेसी। आंसर, इंडिया पॉलिटिकल सिस्टम इज बेस्ड upon the principles of popular sovereignty, representative government which is constituted by free and fair election and is responsible before the people. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। आंसर दीजिए देखो, देयर इज नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया, पीपुल एंजॉय द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ऑल रिलीजन्स आर इक्वली रेस्पेक्ट। यस, इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
तो आंसर दीजिए देखो द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच वाज ए ड्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच वाज ए ड्यूली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन माने यार सोर्स किए आमर पीपुल माने आम भारतर माने पावरटा क्या पाखे रही थे आमर पीपुल मान पाखे रही थे। तापर नेक्स्ट देखो हु फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेम क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ड्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द पीपुल। क्वेश्चन को रिपीट कर दी फ्रेंड। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन। Constitution means the answer constitution means the body constitutional law of the state माने आमर जो संविधान अच्छी सेटा हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड माने आम भारतर संविधान अच्छी माने सबुथर बड़ संविधान पृथ्वी सबुथ बड़ संविधान जहाँ को 2 बरस माने 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लगी फ्रेंड्स। तापर देखो Constitution means body of constitutional law of the state. It lays down the organization, power and interrelation of the 3 organs of government and relationship between them and the people. Relationship between them and the people. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी हमारा व्हाट इज राइट इन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट इन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज राइट इन कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर A right in constitution is written in the form of a book by a constituent assembly. It is a deliberately made and enacted book of constitutional law of the state. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14 नंबर अमर जो व्हाट इज ए रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज ए रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर दीजिए देखो when the method of making an amendment is a special and difficult method the constitution is described as a rigid constitution. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज flexible constitution. आंसर a flexible constitution that which can be easily amended and 3 is no special method of amendment. It can be amended like an ordinary law. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी हमारा व्हाट इज द अथॉरिटी of the Constitution of India. The Constitution of India is a supreme law of the country. All organs of the government are organized under the Constitution and these use power on the basis constitutional provisions. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी हमारा India is a federation of how many states? Yes. Answer the Indian Federation has 28 states. After the creation Telangana India will have 29 states. नहीं फ्रेंड्स एबे 29टा नहीं 28टा अच्छी आउ आमर 8टी केंद्र शासित अंचल अच्छी and 7 union territory the constitution describe as a union state. एबे 28टी स्टेट अच्छी आउ 8टी आमर जो यूनियन टेरिटरी अच्छी यहाँ से टाइम रे ए बुक प्रिंट कराई से मैंने 7टा दी 29टा स्टेट दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ कैन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी एमेंडेड। यस मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी एमेंडेड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द 2 हाउस ऑफ यूनियन पार्लियामेंट। सम ऑफ इट्स पार्ट एमेंडेड by 2/3 majority of houses union parliament by ratification by a last 1/2 of the state. Yes friend 2/3 majority to house union parliament some parts amended by 2/3 majority of the 2 house of union parliament follow ratification by at least 1/2 of the state. Next question number 19 which foreign constitution act shows some features of Indian constitution? Which foreign constitution
as a source of some features of the Indian Constitution? Answer: British, American, Canadian, Australian, Irish, South African Constitution and the Constitution of the Weimar Republic. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन है आमर 90 नंबर क्वेश्चन गला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जीवा तापर अच्छी आमर फिल इन द ब्लैंक्स देख आमर क्वेश्चन नंबर 20 रे कौन दीजिए हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड आंसर दीजिए देखो विथ 395 articles divided into 22 parts and 102 amendments. एवं पर्यंत 102 amendment करागलानी and 12 schedule Indian constitution larger than every other constitution of the world. आमर जो संविधान अछि सबथरो आमर पृथ्वी रे सबथरो बड़ संविधान अछि आमर भारत रो highest law of the land. आम डिस्कसन करवा फिल इन द ब्लैंक्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड घरेबार नहीं देखो द preamble is key to the dex the preamble is key to the constitution of India. तापर सेकंड क्वेश्चन रे देखि preamble declares India to be a dex. The preamble declares India to be a sovereign socialist secular democratic republic. तापर थर्ड क्वेश्चन देखि हमर देखो dex are the four objective of Indian constitution. हमर जो फोर ऑब्जेक्टिव अछि कोन justice, liberty, equality and fraternity are the four objective of Indian state. तब 4 नंबर क्वेश्चन देखो the Constituent Assembly adopted the Constitution of India on 26 November 1949. तब 5 नंबर क्वेश्चन रे देखि देखो Indian secularism stand for dex for all religion, equal status and freedom for all religions. तब 6 नंबर रे इंडियन यूनियन हैज 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज रही अच्छी. तब 7 नंबर रे दिछि कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स डेक्स ऑफ द स्टेट. कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स हमर हवा द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ द स्टेट. तब नेक्स्ट अछि कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड. हमर सुप्रीम लॉ दैछि इथिरे हमर जो आंसर हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड. हां तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर रे राइटन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ए कॉन्स्टिट्यूशन में राइटन एंड इनेक्टेड इन द डेक्स. राइटन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ए कॉन्स्टिट्यूशन राइटन एंड इनेक्टेड इन द फ्रॉम ए बुक डॉक्यूमेंट. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अछि हमर 10 नंबर रे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन डेक्स बी इजीली अमेंडेड. rigid constitution can be amended. तब नेक्स्ट क्वेश्चन अछि हमर 11 नंबर देखो ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड. यस एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन माने वेरी इजीली अमेंडेड. तापर 12 नंबर देखि देखो कॉन्स्टिट्यूशन इज डेक्स स्ट्रक्चर बट डेक्स स्पिरिट यूनियन ऑफ ईच स्पिरिट. तापर 14 नंबर दे देखिए इंडियन सेकुलरिज्म स्टैंड फॉर डेक्स फॉर ऑल रिलीजियंस. द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन सेकुलरिज्म स्टैंड फॉर डेक्स फॉर ऑल रिलीजियन इक्वल. तापर हमर नहीं 13 नंबर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये स्ट्रक्चर बट डेक्स स्पिरिट. तो हमर एटा हबो 13 नंबर क्वेश्चन हवा फेडरल एंड यूनिटेरियन. और जो आमर 13 नंबर जो दी आमर 13 नंबर तो और जो 12 नंबर दी इंडिया
दैट इज ए भारत इज ए माने यूनियन ऑफ स्टेट आमर जो भारत होची राज्य मानकर संघ माने आमर आर्टिकल 1 रे जो देछि यूनियन ऑफ टेरिटरी। तापर नेक्स्ट आम डिस्कशन करबा 14 नंबर क्वेश्चन देछि इंडियन सेक्युलरिज्म स्टैंड फॉर ए इक्वल स्टेटस एंड फ्रीडम फॉर ऑल रिलीजन्स। तापर 15 नंबर रे देछि द क्वेश्चन रिकॉग्नाइज डेक्स लैंग्वेज 22 लैंग्वेज अछि हमरो तो 16 नंबर रे देखि देखो इंडियन यूनियन हैज डेक्स स्टेट एंड डेक्स यूनियन टेरिटरी तो 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी। तो एतकी थिला फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँ फल मुझे जिते भी नुआ वीडियो अपलोड करी आपण मान पाखक पहुँची पार। तो रोची बाय बाय।